Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my dear students. How are you all? I hope that all of you are fine. I am your SST teacher of class 4 and this is your SST's book. So my dear students, as you all know that we have started our online studies once again because of the second wave of the COVID-19. As we have to continue our studies for this process, we have started our online studies once again. So my dear students, kindly cooperate with us and keep yourself in touch with your studies. I believe that distance learning can really help us gain the skills. Hence you don't get a response as you being face to face. Online learning has become central to our teaching model. So my dear students, now open your books. So my dear students, open your books, page number 62, lesson number 16, Muslim rule in the subcontinent. We are going to start our lesson number 16, Muslim rule in the subcontinent. So now everyone keep pencils in your hand, write down the date on the top of the page and start looking at the book. Arabs had been trading with the communities on the west coast of the subcontinent even before the coming of Islam. Arabs had been trading with the communities on the west coast of the subcontinent even before the coming of Islam. इस्लाम के आने से पहले भी अरब्स जो थे वो बराए ज़ख़ीर के मग़रिबी ख़ित्तों के साथ तिजारत करते थे. In 570 CE, यानी कि century, the Prophet Muhammad was born in Mecca in Arabia. In 610, he received the first divine message from Allah and declared the religion of Islam. In 570 means के 570 CE सेंचुरी में जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे वो पैदा हुए मक्का में, अरेबिया में जो कि मक्का है. इन 610 ही रिसीव द फर्स्ट डिवाइन मैसेज. 610 सेंचुरी में उन्होंने क्या रिसीव किया? फर्स्ट डिवाइन मैसेज, यानी कि पहला मैसेज उनको अल्लाह की तरफ से डिक्लेयर हुआ जिसमें कहा गया कि आपने इस्लाम को फैलाना है. आफ्टर मैनी हार्डशिप्स एंड हैविंग टू लीव हिज टाउन एंड मूव टू अनदर सिटी, कई मुश्किलातों के बाद उनको अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह यानी कि दूसरी सिटी में जाना पड़ा जिसको मदीना कहा जाता है. वो वहाँ गए. उन्होंने हज़रत मोहम्मद पास्ट अवे इन 632. हज़रत मोहम्मद जो हमारे पैगंबर थे वो 632 सेंचुरी में वफ़ात पा गए. बाय देन इस्लाम हैड स्प्रेड थ्रू आउट अरेबिया एंड इन द ईयर्स दैट फॉलोड इट स्प्रेड. हमारा जो इस्लाम था वो थ्रू आउट अरेबिया में स्प्रेड हो चुका था यानी कि फैल चुका था. एंड इन ईयर्स दैट फॉलोड इट स्प्रेड फर्दर इनटू अफ्रीका, एशिया एंड द सब कॉन्टिनेंट एंड इवन इन पार्ट्स ऑफ यूरोप. जैसे ही वो अरब्स में फैला उसके बाद वो कहीं और जैसे कि अफ्रीका, एशिया और सब कॉन्टिनेंट्स में भी फैल गया था. इवन इन पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के भी कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर इस्लाम फैल गया था. So my dear students, we will stop our reading over here and now I have written some difficult words on the board. Look at the board and underline the words in your books and write down their meanings. So my dear students, here are some of the difficult words which you have to underline and write down their meanings in your books. So the first word is trading. What is the first word? Trading. Trading को underline करके उसके ऊपर लिखे तिजारत. Underline trading and write down तिजारत. Second is communities. Communities means biradri. Community means biradri. Underline communities and write down biradriyon. Now subcontinent. What is the meaning of subcontinent? Subcontinent means barai zakhir. Barai zakhir. Now fourth one is divine message. The fourth word is divine message. The meaning of divine message is ilhai पैगाम और वही. ilhai पैगाम या फिर आप इसको वही भी कह सकते हैं. Now the fifth word is declared. The fifth word is declared. Declared means elan. Underline declared and write down elan. So my dear students, we have done the reading of first paragraph of lesson number 16. So today's homework for you is the reading of lesson 16 paragraph 1. Thank you.